Hello students, let's proceed for finding moment of inertia for another object which is nothing but the ring. Okay, so first of all, you are quite fortunate that in case of ring, you have to directly learn the formula for moment of inertia about the central axis. Okay, like in disk, हम लोग ने क्या किया था, पूरा derivation किया था mr square by 2 का, correct? So that was just one derivation for one of the object. And similarly ऐसे बहुत सारे derivations possible है for objects like ring, for objects like rod, for objects like cone, for objects like sphere, for objects like a hollow sphere. Okay, but fortunately आपको वो सब का formula directly learn करने का है, सिर्फ एक idea देने के लिए disk का derivation था. Okay, so moment of inertia of ring about an axis passing through the center and perpendicular to this ring, plane of the ring. उसका formula है, it is mr square. Got this? So I have a ring. Obviously, you must have seen in my previous lecture. So this is that ring. Okay, and ये pencil को axis समझो. So this axis is passing directly through the center like this. Okay, so यहाँ पर इसका value क्या है? mr square. Let's solve three cases. Okay, first case, moment of inertia about a tangential axis that is passing through one end and it is perpendicular to the plane of the ring. So ये ring है, अब इसका plane मतलब कौन सा हो गया? Horizontal plane हो गया. ऐसा समझो, यहाँ पर एक rectangle assume करो, imaginary rectangle. Okay, so like this, length, breadth, again length, again breadth. ये हो गया क्या? Ring का plane. तो क्वेश्चन में क्या लिखा है कि एक्सिस टेंजेंशियल है. ओके, वन एंड से पास होना चाहिए. सो वो रिंग को परपेंडिकुलर होना चाहिए, प्लेन ऑफ द रिंग को परपेंडिकुलर. सो अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो वो एक्सिस ऐसा वर्टिकल होना चाहिए. एग्रीड, एंड इट शुड पास थ्रू वन एंड. सो ये रहा वो एक्सिस. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. ओके, सो अबाउट दिस एक्सिस दे हैव आस्क्ड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो कैसे फाइंड करेंगे? हम लोग ने डिस्क में भी ये किया था, वही अप्लाई करना है. दिस इज दैट एक्सिस जो मैंने अभी पेंसिल से शो किया. सो आई विल राइट दिस एज आई टेंजेंशियल. ओके, एंड इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग. सो ये एक्सिस और ये एक्सिस पैरेलल हुआ. सो यहाँ पर हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं. तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है? IO is equal to IC प्लस mh स्क्वायर. अब समझो IO ये होता है, ओके, सेंटर को छोड़ के कोई और पॉइंट, दैट इज योर IO. IC obviously this and h is the distance between two parallel axes. So यहाँ पर ये distance h है, which is nothing but equal to radius. Got this? So now IC I will write as mr square, okay, plus mh का वैल्यू भी r है. So again I will write r square. So this is how I get the value as 2mr square. Done with one part. Let's go for second part. Moment of inertia about its diameter. So ये हो गया diameter. Okay. So ये है अपना y axis. So moment of inertia about y axis is iy. Similarly यहाँ पर भी मैं diameter draw कर सकता हूँ. Okay. So that will be called as your x axis. ठीक है. So in this case, what we are going to do, ये डिस्क के जैसे ये रिपीट हो रहा है, इतना समझो. So I will write this formula of perpendicular axis theorem. अब perpendicular axis theorem क्यों होगा? मैंने डिस्क में भी बताया था. This is one axis, y diameter, इधर x axis वो भी diameter का काम कर रहा है, and हमको इसका वैल्यू पता है, which is perpendicular to this ring, जो कि हो गया कौन सा axis? Z axis. And Z and this C are same. Okay, सिर्फ नोटेशन चेंज हो जाता है as per the question. Got this? So here I am going to apply IZ is equal to IX plus IY. अब हमको पता है x और y दोनों डायमीटर ही है, so I can write this as I diameter plus I diameter and IZ का फॉर्मूला यही लिखेंगे, which is mr square. So that is how I get I diameter
is equal, sorry, 2I diameter is equal to mr square, and finally I diameter I get as mr square by 2, and this is also equal to ix because x axis भी diameter का काम कर रहा है, and this is also equal to iy. But this, let's go for the last case. अब last case में क्या है? Moment of inertia about tangential axis in the plane of ring. तो diagram में पहले show करता हूँ. This is that axis. ये है वो एक्सिस, ओके, इसका. सो आई नेम दिस अगेन एज आई टेंजेंशियल, इसको मैं आई टेंजेंशियल ही लिखूंगा, बट ये प्लेन में है, ओके. सो अगेन इन द रिंग आई विल शो यू हाउ इट हैपेंस. सो दिस इज आवर रिंग एंड इधर है वो एक्सिस, ओके. सो प्लेन आपको पता है रिंग का हॉरिजॉन्टल है, लाइक दिस हॉरिजॉन्टल है. सो वही प्लेन में आपका एक्सिस होना चाहिए. तो ये अगर मैंने ऐसे शो किया होता तो ये प्लेन को परपेंडिकुलर हो जाता. सो पैरेलल चाहिए अपने को. सो ऐसा कुछ आएगा, ओके, ऑन दिस साइड. अगर मैं आपके साइड शो करूं तो दिस एक्सिस विल बी लाइक दिस. आई होप यू अंडरस्टैंड. ऐसा टेंजेंशियल, ओके. सो ये हो गया टेंजेंशियल एक्सिस व्हिच इज इन द प्लेन ऑफ द रिंग. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. So about this axis we are going to find. So कैसे find करेंगे? We are going to again apply parallel axis theorem. यहाँ से find करना है, and ये axis का value हमको पता है I y. So ये दोनों parallel हो गया. So I'll again write I o is equal to I c plus m h square. इस बार I o आपका क्या है? This is your I o. ठीक है, सेंटर को छोड़ के कोई और पॉइंट. दिस इज एक्टिंग लाइक योर आई ओ. इस बार आपका आई सी क्या है? सेंटर से पास होने वाला. इस बार आपका आई सी इज दिस आई वाई. ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड. एंड एच, एच तो वही है, ये डिस्टेंस दो एक्सिस के बीच में, which is coming again as equal to radius. Okay, so I will write I O actually आपका I tangential का काम कर रहा है. I C ये केस में आपका I Y का काम कर रहा है, plus m r square. Okay, I y value you know it is written m r square divided by 2 plus m r square. इसको सॉल्व करोगे तो you will get क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3 by 2 m r square. So this is how we complete one more object called as ring and its moment of inertia about various axes. So students, let's move on to the new object which is thin uniform rod. So as I told you, you are just supposed to learn the formula about a moment of inertia through the axis passing through the center. Okay, so ये rod है जिसका length capital L, okay, and ये वो axis है जो समझो center से pass हो रहा है. Okay, so this will be written as IC, moment of inertia. So इसका formula है, it is equal to m L square divided by 12. Direct formula learn करना है. Now we are going to solve two more questions. In this question, moment of inertia of that rod through about an axis passing through one end. तो ये हो गया वो axis. So I can call this as I tangential. ओके, सो आई टेंजेंशियल फाइंड करेंगे. सो आई होप अब तक आपको क्लियर हो ही गया होगा कि यहाँ पर आप क्या करोगे. यू विल अप्लाई डेफिनेटली योर पैरेलल एक्सिस थ्योरम. सो आई विल राइट IO is equal to IC plus MH square. सो ये रहा आपका IC जिसका फॉर्मूला है ML square divided by 12. देन IO ये हो गया आपका IO, ओके, अदर पॉइंट देन सेंटर. देन H का सोचना पड़ेगा. अब h होता है ये डिस्टेंस. दिस डिस्टेंस इज योर h, the distance between two parallel axes. In this case h is nothing but equal to half of length. Okay, ये सेंटर था और ये दूसरा साइड है. So this will be L by 2. Let's substitute over here. Square करके put करते हैं. L square by 4. Now you know what I am going to do. मैं 3 से multiply करता हूँ so that denominator 12 हो जाए. So that is how 12. 3 ml square plus 1 ml square will give me 4 ml square,
and that is how 1s are 3s are. So I get final answer as ml square by 3. I hope you understood this. Let's go for second case. In this case, you are supposed to find moment of inertia about an axis which is passing midway between center and one end. ये आपका सेंटर है, ये समझ लो वही दूसरा एंड है, एंड इन दोनों के बीच में इधर वो एक्सिस है. ओके, सो दिस इज आई राइट एज आई एम. गॉट दिस? अब इसमें भी क्या करेंगे हम लोग? पैरेलल एक्सिस थ्योरम में अप्लाई करेंगे. दिस एक्सिस से फाइंड करना है एंड इसका वैल्यू आपको पता है. So I will write IO is equal to IC plus MH square. इस बार आपका IO क्या है? This is acting like your IO, जहां से आपको फाइंड करना है सेंटर से कोई दूसरा पॉइंट. ओके, so this is like IM. IC का वैल्यू आपको पता है, which is ML square by 12. Okay, then H. Let's think about H. Here the value of h will be equal to, इसका भी हाफ करना है, ठीक है, हाफ का भी हाफ. दिस वाज l by 2, करेक्ट. उसका भी हाफ करोगे तो क्या हो जाएगा? l by 4. so I substitute l square by 16. अब बस इसको सॉल्व करना है. so what I can do is ml square को कॉमन ले सकते हैं, then I am left with 1 by 12 plus 1 by 16. कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई. So this will give you 16 plus 12, that is 28, and 16 into 12. Let's divide this by 4. 4 से divide होगा. 4 7s are and 4 3s are. So that is how I get final answer as 7 ml square by 48. So this way we complete the part for thin uniform rod. So students, let's move on to the last object, which is nothing but sphere. Now sphere is a very interesting concept because sphere is an object which is spreaded in 3-dimensional. एक फुटबॉल का एग्जांपल लो. फुटबॉल में आप अगर ऐसे वर्टिकली एक्सिस डालोगे z एक्सिस तो भी वो डायमीटर कहलाएगा. ओके, डायमीटर बन जाएगा स्फीयर का. अगर आपने कोई हॉरिजॉन्टल एक्सिस फुटबॉल के अंदर डाल दिया तो वो भी एक डायमीटर का काम करेगा. अगर आपने ऐसा कोई x एक्सिस डाल दिया स्फीयर के अंदर तो भी वो डायमीटर का ही काम करेगा. ओके, सो ऑल थ्री एक्सिस, whether it is IZ, IX or IY, they are acting like diameter. They are all passing through center. Okay, so IC, that is moment of inertia through center for a sphere, formula is 2 by 5 mr square. And let me tell you, this is also equal to IZ, that we always know. IC और IZ same होता है. But in this case, that is also equal to IX, that is also equal to IY. Okay, so एक ही formula learn करना है. Diameter and also separate things are not involved in this. Now we can find moment of inertia about a tangential axis only. Okay, you will understand the reason क्योंकि इसमें एक ही case क्यों आया, उसका reason भी समझेगा. So let us consider this was your y-axis, moment of inertia about y-axis. This was your moment of inertia about x. And this was your moment of inertia about z. ठीक है? So tangential axis मतलब ये वाला हो गया. Let's say this side. I'm drawing this side. This is like touching over here. Consider. Okay? So वो ऐसे touch हो गए जा रहा है. Tangential है. So in this case, we will obviously apply which formula? Parallel axis theorem, which is IO is equal to IC plus MH square. IC क्या है आपका? IZ है जिसका फॉर्मूला है 2 by 5 mr square plus m. ये दोनों एक्सिस के बीच में अगर डिस्टेंस देखोगे, this is the distance which is your h, and this is nothing but equal to r radius. So I'll get r square over here, and इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे. So I hope your answer will be 7 by 5 mr square. Now समझ लो ये tangential axis मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है. ठीक है? Now in this case ये tangential axis का फॉर्मूला भी यही आने वाला है. Why? Because फिर से parallel axis theorem अप्लाई करोगे. इस बार आपका IO ये हो गया. Got this? And इसको पैरेलल कौन सा एक्सिस है? This IY.
अब आई वाई का फॉर्मूला भी क्या है, 2/5 mr², वो भी सेंटर से ही पास हो रहा है, करेक्ट और नॉट? सो ये अभी आई वाई की जगह ले लेगा, करेक्ट और नॉट? सो फॉर्मूला तो वही आने वाला है. एंड अगेन इफ यू चेक दिस डिस्टेंस, दिस इज आल्सो इक्वल टू r. So again you will substitute r, so same answer you will get. So in this case wherever you find one and tangential, कुछ भी find कर लो, कोई भी tangent पे find कर लो, the answer is going to come 7/5 mr². So that is the interesting part of sphere. We just have to understand only two formulas in case of an object like sphere. A list of few more objects whose moment of inertia I have written on the board. No derivation, just direct formulas and no further solving. Okay, जरा list पे ध्यान दे दो. If the sphere is hollow, इसके पहले हमने जो sphere किया था, that was a solid sphere. अब hollow sphere है, अंदर से खाली है पूरा. Then moment of inertia में phi के बदले क्या आएगा? 3, 2/3 mr². If it is a right circular cone like this, okay, इसको अगर axis draw करोगे आप, तो यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा, hence it is a right circular cone. Then this will be called as the radius. ये distance from this part end part to the center will be your radius. So उसका moment of inertia का formula है 3/10 mr². Then if it is a hollow right circular cone तो हो जाएगा half mr². ये disk के साथ match हो गया, okay? Then if we have a thin uniform plate, एकदम पतला सा plate है जिसका length L, breadth B, so in that case the moment of inertia formula will be half capital M mass of the plate L² plus B². So this way we complete the topic of moment of inertia of all the objects. Thank you.